could I now request Mr. Gogihara to give the flower bouquet to our guest, Mr. Furukawa. To Furukawa-san. Now I would request Chairman of K House, Japan, to say a few words to this gathering.皆様、本日は、お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。日本からやってまいりました K ハウスの古賀原と申します。本日はよろしくお願いいたします。Thank you so much all of you for being here today, despite your very busy schedules. My name is Kohara and I have come from Japan. すみません、こちらからは素晴らしさままでやらせていただきたいと思います。よろしくお願いします。And from now on, I'll speak sitting down. So please just hold on. 日本とインドは昔、豊かで独創的な文化を持つ2つの国です。India and Japan are two countries which have a very rich culture, which closely resemble each other. 食や衣類、芸術などさまざまな点で、共通点もございますし、共に文化が影響を及ぼしてきた過去の歴史もございます。Whether we talk about clothing or art or social practices, we can find similarities between all of them. その中の一つである映画ですね。これはさまざまな角度から一つの国の文化を映し出す鏡のようなものです。One such facet of culture is also cinema, and in cinema you can see everything about a country's culture. 映画を通して私たちはその国の歴史、ライフスタイル、文化、価値観などを知ることができております。Through watching movies, we can learn all about a country's culture, its values, its history. Good afternoon, everybody. My name is Furukawa, and I am from JETRO, the Japan External Trade Research Organization. ジェトロっていうのはですね、日本の経済産業省のWarm welcome to my friends from Japan. It's indeed a glorious day when you are kickstarting the Japanese Film Festival in the entertainment capital of India. Well, I'm reminded of the year 1984 when I went with my film Saransh to Moscow. The film was a critical hit but a box office failure in Mumbai and in India. It did not recover money. But when the film was shown in Moscow, there was a Japanese representative who loved the film so much that he came forward and he made a purchase of that film for the television network. And he paid an exorbitant amount at that time, thereby taking the film from what is the red space to the plus space. So I'm indebted to Japan in the very beginning of my career for bailing me out with a film which was merely a critical hit in Mumbai and India, but not a box office success. And had it not been for that brave film representative from Japan, I wouldn't have been able to boast that Saransh was not only a critical success, but also generated wealth. Film festivals play a significant role in the destiny of filmmakers and the people of that region where the film festivals are held. I distinctly remember in the winter of mid-70s, when I was in the dawn of my career, I had gone to New Delhi, where I came face to face with the icon that you were referring to, Mr. Kurosawa, a tall, handsome man with his very short wife. And unfortunately, the Babus of Delhi did not know what his value was. So he was standing there in the lobby looking for a room. And I remember the great Sukhdev, the filmmaker of great repute, a man who made television, advertising films and also made a feature film, how we fought to give Mr. Kurosawa
the respect and the attention that he deserved. So it is because of film festivals that you draw icons from different countries into alien spaces. Globalization does not mean westernization. Globalization also means forging very, very strong ties with your Eastern brothers. 2,500 years ago, the Buddha generated an unbreakable bond between Japan and India. So our relationship, sir, goes 2,500 years ago. And we must thank the Buddha who was responsible for building those formidable ties. As we know, Buddhism was born in India. It kind of blew up, but finally flowered in Japan. And the schools of Buddhism in Japan are something that you need to value as treasures of the human race. Coming to movies, yes, I think what we just saw, the images that flickered on the screen, had stunning imagery. Of course, they were soaked with human drama. And I think the Japanese cinema has never shied away from raw emotions. And I think cinema is an emotion-evoking vehicle. And I'm certain that when the people of India and people of Mumbai will be exposed to the contemporary Japanese cinema, you will only broaden your horizon, because unfortunately we have had a kind of a stunted growth in the space of cinema. We only have been consuming cinema which comes from the West. And I think it's high time we also start looking towards East and realize that we have a lot more to share with our Eastern brothers. And I think with the Prime Minister's visit to Japan, the writing is on the wall that the bonds between our two countries will only get stronger. And I'm delighted that you are here and you're opening your doors for us to come there to explore the possibilities of shooting in your country. We're only frightened that Japan may be a very expensive country. The idea of going to Shinjuku and shooting there seems a distant dream. It may be affordable by Hollywood standards, but we still are a country which, though we may have come from far away to a very strong position now, but we, in the space of cinema, as you said, we are 7th in the list. So we have to count our foreign exchange when we come there. So initially, I would urge you to ask your governments to facilitate the shootings of the few films that come in the initial phases, so that images can be brought from Japan into India and the people of India are exposed to it, and then a kind of a movement begins. So a certain amount of investment will have to be made by you to kickstart this relationship, because it's very difficult to break into new spaces. There's a kind of a mental block, and that mental block can only be broken by aggressive persuasion. So I'm glad that you guys have taken the first step, and I'm certain that the film industry here will reciprocate. And I'm certain that in times to come, when we look back, today's day will be seen as a glorious day when something was kick-started between India and Japan, which will only make the story of India and Japan richer. Thank you. Thank you so much for your precious comments and your perspective. The raw material of cinema is life itself. That's what Satyajit Ray had said. And true to it that, cinema can transcend all barriers, all languages, and whatnot. I would look forward to see a Mahesh Bhatt film made in Japan very soon. And so I think the topic of film critique, which is being discussed, so I'm sure that, we will, I have... Difficult to read this really hard script. So it's better not to read. Actually, I am very comfortable to Japanese than the English and Hindi, because I was in Japan more than 22 years.
I am working as a MD of K House. We have 40 service center in Japan, and we just started in India. We have 3 offices and restaurant in 3 different cities. Thank you very, very much, our special guest, Mr. Mahesh Bhatt and Mr. Furukawa. Thank you very, very much of everybody. I think it's better to hear from our guests, not to me. Thank you very, very much. Thank you. Ladies and gentlemen, may his soul rest in peace. Japanese films.言葉の問題はあるんですけれども、例えば日本の映画に、インドの風景をこれからたくさん入れていくとか、文化を入れていく、または逆に日本の映画、インドの映画の中に日本のその綺麗な景色ですとか雪とかそういったものを入れていくことで少しずつ距離を縮めて、いきなりビッグマーケットになると思ってないんですけども、徐々にそれは広がっていくと、お互いの国同士かなり興味あるとは思いますので、これから広がっていくとは思っております。So he says that initially maybe India would be seen in many Japanese movies. Similarly, Japan may be photographed in many Indian movies. So by doing this, the 2 countries will come a little closer together. He says हाँ, क्योंकि इनको लगता है कि हमारे मुल्क में जो हमारी 1.2 बिलियन की आबादी है, वो एक बहुत ही पोटेंशियल मार्केट है इनके लिए। हर जो मुल्क है हिंदुस्तान को देख रहा है, क्योंकि हमारी एक नौजवान पीढ़ी है और जो कंजम्पशन का जो हमारा फ्यूचर है बहुत ज़्यादा है। और मुझे यकीन है कि जो एक वैरायटी की खोज हमेशा रहती है और एक मोनोटनी आ गई है वेस्टर्न सिनेमा के साथ में, और इनका सिनेमा वाकई बहुत ही अनोखा सिनेमा है। और वक्त के साथ में ये मानते हैं कि अब तो शुरुआत है, मगर हो सकता है कि अगर ये परसिस्ट करें तो एक टेस्ट कल्टीवेट हो जाएगा। मगर बहुत अहम बात यह है कि अगर ग्लोबलाइजेशन की हम बात करते हैं तो क्या सिर्फ हम वेस्टर्नाइजेशन में यकीन रखते हैं कि ईस्टर्न जो हमारे जो साइड के लोग मुल्क हैं उनके साथ भी हम रिश्ता जोड़ेंगे। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है कि हम ईस्टर्न रीजन्स के साथ में अपने रिश्ते गहरे करें। उससे हमारी इकोनॉमी में तो एक नई ऊर्जा आएगी, मगर कहीं पर हमारा सिनेमा का जो एक टेक्सचर भी बदलेगा। क्योंकि जो जैसे हमने गैंगस्टर फिल्म शूट की थी साउथ कोरिया में, तो उसका पूरा जो एक एम्बियंस था, उसका पूरा जो कलर था बहुत ही अनोखा था। और यहाँ का दर्शक ऊब गया है कि वही वेस्टर्न जो एक लैंडस्केप देखकर। जब हम ईस्ट में जाएंगे, और यहाँ वाकई जापान हम गए हैं, बहुत ही खूबसूरत एक मुल्क है और यकीनन दोनों को लाभ हो सकता है। और ऐसे ही शुरुआत होती, पहला कदम कोई लेता है, ये चल के आए हमारे पास। और आज का हिंदुस्तान जो है थोड़ा एडवेंचरस है, ज़्यादा हिम्मत करता है। पहले तो ज़माने ऐसे थे कि हम लोग घर से निकलने से डरते थे, बड़ी मुश्किल से पनवेल तक जाके शूटिंग करते थे। सारे गाने जुहू बीच पे शूट होते थे, याद है आपको? एक ज़माने थे हमारे बाप दादा। तो लोग घर से निकले हैं, जाते हैं बाहर, एडवेंचरस किस्म की स्पिरिट आ गई है। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी ग्रेट बिगिनिंग। इट विल टेक अ टाइम टू फ्लावर, बट इफ दे आर परसिस्टेंट एंड वी आर परसिस्टेंट। बट साहब, जहाँ एक तरफ हम बात करें ग्लोबलाइजेशन की, दूसरी तरफ हम देख सकते हैं सेंसर बोर्ड की तरफ से काफ़ी इश्यूज होते हैं। यू हैव बीन एट लॉगरहेड विद सेंसर बोर्ड सिंस ईयर्स, सो अभी भी ये प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है। देखिए, इससे तो जूझना पड़ेगा सारी उम्र। 40 साल हम लड़ते रहे हैं, ये लड़ाई जो है हमारे बाद आप लोग लड़ेंगे। ये लड़ाई जो है कभी पूरी होगी नहीं, क्योंकि इंसान की स्पिरिट जो है वो पूरी तरह मुक्त होना चाहती है, मगर जो हमारे समाज के ढांचे हैं वो आपको किसी तरह से किसी लक्ष्मण रेखा में बांध के रखना चाहते हैं। ये हमेशा, मगर ये भी सही नहीं है कि हमारा सेंसर बोर्ड इवॉल्व नहीं हुआ है। इट विल बी वेरी अनग्रेशियस एंड अनजेनरस ऑफ अस। हमारे सेंसर बोर्ड में भी परिवर्तन आया, काफ़ी उनकी सोच में भी एक नई सोच हमने देखी है। तो आई थिंक आई एम होपफुल दैट द टाइम्स टू कम थिंग्स विल गेट बेटर।
To see that we are maintaining ties with Japan and making movies, but it's also sad to see how within the country there's so much turmoil going on, and with in light of recent events, the Hindu Mahasabha in UP has termed all actresses that have danced in item numbers as prostitutes. So what is your take on this? I'm as outraged as you are. Perhaps a little more outraged than you are. But it's a fight that we have to fight, and it's an internal problem that the nation has to resolve, and that is that's what happens in evolving countries, and there will be certain people who would be convinced that their way of thinking and their way of life is the way of life to live, and there would be others who would feel that their way of life is their way of to live. But I would say the enlightened view is that a diverse country like India should provide the bandwidth for all kinds of thinking to coexist harmoniously. And that has been the endeavor of all enlightened governments. And I'm certain that as long as you raise questions on forums like this, the country is safe and our freedom will be intact. Thank you. But साहब, adding to the question, recently Gohar Khan के साथ एक incident हुआ था national platform पर, उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहिए थी? फ्रेंच अपना जापानीज सिनेमा का फेस्टिवल का एक अवसर है, इसमें अगर हम अपने ऐसी इश्यूज को लेकर वक्त ज़ाया करेंगे तो मुझे लगता है कि इनके साथ में नाइंसाफ़ी होगी। उसके बारे में लोगों ने निंदा तो की है कि ये हमारी औरतों के साथ में बदसलूकी की जाए, तो इससे तो कोई सहमत नहीं है। उस शख्स ने वो क्यों किया, उसका दिमाग ठीक था, किसी ने उसे करवाया कि नहीं करवाया, ये हमारे आपसी इश्यूज़ हैं। हमारे भाई लोग आए हैं प्रदेश से एक रिश्ता जोड़ने के लिए, अगर इस मंच पे हम ये डिस्कस करेंगे तो शायद इनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। भट्ट साहब, हिंदी फिल्मों के बारे में बात करते हुए एक एक्चुअली ये चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हिंदी फिल्मों का बहुत बड़ा योगदान है कि मुंबई पुलिस ने इंडिया में पुलिस की छवि खराब होती जा रही है, इसमें बॉलीवुड का बहुत बड़ा हाथ है। आपका इस बारे में क्या कहना है, क्योंकि हम यहाँ फिल्मों की बात कर रहे हैं? देखिए, फिल्म जो है, फिल्म मेकर पर अक्सर ये आरोप लगता रहा है कि वो समाज में को डिस्टॉर्ट करके पेश करता है। ये बहुत बड़ा एक डिबेट रहा है सालों से। मेरी पर्सनल व्यू ये है कि आप आईना तोड़कर अपना चेहरा ठीक नहीं कर सकते। अगर आपको अपना रिफ्लेक्शन आईने में ठीक देखना है तो आपको अपना स्वास्थ्य ठीक करना पड़ेगा, अपना चेहरा ठीक करना पड़ेगा। मगर हाँ, ये भी एक सच्चाई है कि कभी कभार हम बहुत ही एग्जैजरेटेड एक डिमोनाइजेशन करते हैं पुलिस की, और उसको प्योरली ड्रामेटिक पर्पस के लिए करते हैं। मगर ये कहना कि हर पुलिस वाला जो है बेईमान है, हर पुलिस वाला जो है वो भ्रष्ट है, ये एक एग्जैजरेशन है। मगर हिंदी सिनेमा का अगर आप इतिहास देख लें तो अक्सर हमने फिल्में ऐसी बनाई हैं जहाँ पर पुलिस वाले को ग्लोरीफाई किया। जंजीर जैसे थी, सिंघम जैसी है, तो पुलिस वाले ने तो हमारी फिल्मों में बहुत की रोल्स प्ले किए हैं, मॉरल कंपस रहे हैं। हाँ, एक दौर आया था जहाँ पर पुलिस के अंदर एक करप्शन लोगों ने महसूस किया, तो उसका एक रिफ्लेक्शन हमारे पर्दे पर नज़र आया। मगर अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये बात रेस की है तो हम सबका फ़र्ज़ है कि हम पॉज करके उसको रिजेक्ट ना करें, उसको उस पर ध्यान दें और पूछें अपने आप से, क्या हम ऐसा करते हैं? अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें वही करना चाहिए जो हमारा दिल कहता है। Of course,